दिस इज अयोध्या योर फ्रेंड्स। आपका स्मार्ट एट्रीब्यूट लर्निंग चैनल पे स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड अ फैक्टोरियल गिवन नंबर in Python using for loop. So without any further delay, let's get to start. Now open IDLE and open that and a file new and write the program. This is single line command. Fact, find factorial. Find factorial. यूज़र से इनपुट लेते हैं। एक मैसेज प्रिंट करते हैं। प्लीज इंटर अ नंबर फॉर नोइंग इट्स फैक्टोरियल। and enter using for loop for I in range a comma 0 comma -1 decrement सेमीकोलन इंटर। लॉजिक लिखते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, but after that first we initialize fact value. Fact is equal to 1. Now print fact. Now save the program, Ctrl S and D drive Python। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, बट .py कंपलसरी। ऑलरेडी बता रहा है। आप F5 यूज करके भी रन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली रन। F5 please enter a number for knowing its factorial. I will enter 10, sorry 3, and result is 6. Now again I will try. Please enter number for knowing its factorial. I will enter 6 and 7 2. So thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.